नहमदहू नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तमाम मुसलमान दोस्तों भाइयों को अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम ऑल फॉलोअर्स टू माय यूट्यूब चैनल। बराए मेहरबानी तमाम दोस्त इस वीडियो को मुकम्मल देखें, एंड तक देखें, तमाम स्टूडेंट्स को एंड तक लाजमी देखें, और वो दोस्त जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। व्हाट इज AMU एंड एटॉमिक मास? We discussed earlier that atomic mass is the number of protons and neutrons in atom. It is its mass. And what is AMU, atomic mass unit? There is a big point to be discussed here, that we do not have anything to measure the mass of an atom. It is so small to be measured. So we have some instrument, but these instruments just can compare the ratio of one element to the other. So there is a rule. There is a rule in which the carbon's 12 atoms are taken as base. We all compare every atom's mass to the carbon's 12 atom, and what we have is a unit. Carbon's from the carbon 12. Single carbon's atom is its unit. So every element that's mass compared to the carbon's 12 by 1 by 12, it is known as its unit, and we called it AMU. It's abbreviation of atomic mass unit. So what is atomic mass unit? Atomic mass unit is basically comparisons of an element's mass by the carbon's 12 atom. That's what we called AMU. Why we compared it? We discussed it earlier that we did not have any instrument to measure the exact mass of some element. So we take comparisons with other elements, and for the comparisons we have carbons. We have C12, and carbon's 12 atoms are known as comparisonal unit, and every element which mass has been compared with carbon's 12, that is known as atomic mass unit. We have some atomic mass units discussed here. That proton's atomic mass unit is 1.0073 AMU, and if we told it in grams, that's 1.62 multiplied by 10 per hour minus 24 gram. And the atomic mass unit of neutron is 1.0087, and its grams are, its mass are known as 1.674 multiplied by 10 per hour minus 24 gram. And the mass of electron is 5.48 multiplied by 10 per hour minus 4 AMU, and its mass is 9.106 मल्टीप्लाइड बाई 10 पर ओवर माइनस 28। तो आज हमारे पास जो छोटा सा टॉपिक है जिसको डिस्कस करना है, इसके साथ एक नई वीडियो भी लगाएंगे जिसमें हम आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने का तरीका बताएंगे। लेकिन ये छोटा सा टॉपिक है जिसके अंदर हमने बात की है कि AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट क्या चीज़ है। और एटॉमिक मास, हम एटॉमिक मास के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि एटॉमिक मास किसी भी चीज के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की तादाद के बराबर है, वो हमारे पास उसका मास नंबर है, और उसका जो हमारे पास एटॉमिक मास यानी कि वो हमारे पास उसका मास बनता है। तो इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट चीज वही आ जाती है कि क्या चीज है हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट। तो हम कह चुके हैं कि कार्बन को इसके अंदर बुनियादी एलिमेंट के तौर पर लिया गया है। क्यों लिया गया है? हमारे पास ऐसा कोई भी आला नहीं है जिसके अंदर हम किसी भी एलिमेंट के एग्जैक्ट मास को जांच सकें। तो ये उसको जांचने की बजाय हमारे पास कुछ ऐसे आलात मौजूद हैं जिनकी मदद से हम उनको किसी भी एलिमेंट के साथ मुवाजना करा सकते हैं। तो सारे एलिमेंट्स में से हमारे पास कार्बन के जो 12 एटम है, ये हमारे पास बेस्ट कंपैरिजनल एलिमेंट है। तो हम क्या करते हैं, उस एलिमेंट को लेकर कार्बन के 12 एटम के साथ उसका मुवाजना करते हैं। तो यानी कि कार्बन 12 एटम में से जो 12th पार्ट है वो उसका यूनिट है। तो किसी भी एलिमेंट का जब हम इसके साथ मुवाजना करते हैं तो जो हासिल होने वाला हमारे पास मुवाजने के बाद हासिल होने वाला जो अदद है, जो मुराद उसकी कीमत बन रही है, वो हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट है। तो यानी कार्बन 12 के 12वें हिस्से के साथ
जब किसी एलिमेंट को मुबादला किया जाता है तो वो जो मुबादला करने के बाद की अदाद है वो हमारे पास उसका एटॉमिक मास यूनिट है, उसको हम AMU से लिखते हैं। ये एब्रीवेशन है, ये शॉर्ट फॉर्म है AMU। A से एटॉमिक, M से मास, U से यूनिट। यहाँ पर कुछ वो दिए गए हमारे पास प्रोटॉन है। प्रोटॉन हमारे पास 1.0073 यानी कि 73 हो रहा है AMU। अगर ग्राम में लेंगे तो ये 1.672 ضرب 10 की ताकत -24, यानी क्योंकि ये यानी कि खाली उसको लिखने के लिए अगर आप उसको इशारा को उधर बढ़ाते जाएंगे, जीरो लगाते जाएंगे, या आप बेहतरीन मैथमेटिक्स में बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके होंगे। न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन यानी कि साइंसी हालात में जैसे लिखा जाता है, न्यूट्रॉन्स की हमारे पास जो बन रहा है AMU हमारे पास 1.0087 है और ग्राम में 1.674 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻24 ग्राम के अंदर। इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो हो रहा है उसका AMU 5.486 5.486 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4 AMU 10⁻4 AMU और ये 9.106 ضرب 10 की ताकत -28 इसका हमारे पास ग्राम्स में निकलेगा। यस फ्रेंड्स, व्हाट वी आर लर्निंग नाउ, it's simple but very important if you want to understand chemistry. If you want to clear your concept about chemistry, you must have to listen this. How to write a chemical formula. How to write a chemical formula, it's as important as breathing for living things. It's as important for the chemist. If you want to understand chemistry, you must have to understand how a chemical formula is written. There are 5 rules to be followed. First, each element which is represented by each element, if it is an ions, it must represented by its charge. It must have a negative charge and a positive charge. You have to write their charges at the top of them. For example, for the Na, you have to write a symbol. If it is possible, you have to write it at the end of it is positive charge and negative charge. But there is a rule to be followed. There are 2. What is the rule? The positive charge must be written at the right end and the negative charge must be written at the left. It is Na. It is on the right side and the left side it is Cl. It has to be written. Positive charge are written at the right side and the negative charge is to be written at left side. And every element, every ions, every atom that has charge must be written at the top of their, it's a symbol, it must be written at their top. For example, for the sodium, it has positive charge, so positive sign is written at their top end. And for example, calcium, positive 2, O2, negative charge, it must contain their charge at their top. It is their valency. It shows that how much electron an element needed or how much an element's electrons to be lost. And their valency is how to show their valency in a chemical reaction. If you are giving a formula or you are making something in example, you have to write it like each element's upside valency must be joined to the lower end and must other upside joined by the next lower things. That's how you have to write them and show them. And the next is, if some elements, if they have atoms have the same charge, you never need to write them. For example, in NaCl, they both have single charge, single valencies. So you don't need to write one at their end. And if they have different, for example in calcium chloride, CaCl, calcium has a single and the chloride has double charge. So there is the difference between 1 and 2. So you must have to write them at their
And the fifth is, if it is a formula unit, it is formed by, as we say that something is made up of some ions used to form the radicals. I'm giving you an example. And they have the same charge and same net charge. For example, in sulfate, SO4 here sulfur and oxygen have both has -2, so it's represented by same charge. Net charge are represented by same. And phosphate, PS4O3, here the net charge is -3, so it is represented as in second and third unit. We clear it, second and third point. Now if they have different charge, there is a single rule that if something is made up of positive and negative charge, and there is must to be followed single rule that negative is always written in brackets. That's why rule, if you follow then you understand how chemical formula is to be written. इसको थोड़ा सा समझ लें कि अगर आपने केमिकल फार्मूला को कैसे लिखना है समझना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपने इस चीज़ को सिंपली फॉलो कर लिया, अगर आपको इस चीज़ की समझ आ गई कि केमिकल फार्मूले को कैसे लिखना है, इसके 5 सादा से रूल है, सादा अल्फाज में बयान कर रहा हूँ कि अगर आप इसकी समझ आ गई तो ये आपके लिए केमिस्ट्री में बुनियादी किरदार अदा करेंगे। ये आपको कभी भूलने नहीं देंगे। आपने केमिकल फार्मूला कैसे लिखना है, इक्वेशन कैसे बनानी है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैसे हल करना है, ये सारी चीज़ों का निचोड़ इसी चीज़ के अंदर आ जाता है। अगर आपको एक चीज़ को लिखने का तरीका आ गया, उसके कुछ रूल हैं। पहला कानून क्या है हमारे पास के, तो दो एलिमेंट्स के ऊपर, जो एटम्स के ऊपर चार्ज हैं, उनको ऊपर वाली साइड पर लिखा हुआ है, तो जो जमा वाला चार्ज है हमेशा दाईं साइड पर, और जो मनफी वाला है उसको बाईं साइड पर, लेफ्ट और राइट साइड पर लिखे जाएंगे। ये हमेशा। दूसरा रूल हमारे पास ये है कि जो उनका जो भी चार्ज है हमारे पास, उसको उसके ऊपर हमने जाहिर करना है, लिखना है। उसके बाद उसकी वैलेंसी की बात आ जाती है। तीसरा रूल हमारे पास वैलेंसी का है। आपने हमेशा ऐसे करना है कि एक एटम की वैलेंसी को ऊपर वाली साइड से पकड़कर दूसरे एटम की वैलेंसी की नीचे वाली साइड से मिलाना है, यानी उसका जो ऊपर वाला एंड है उसको नीचे वाले एंड को, दूसरे को भी बिल्कुल सेम तरीके से ऊपर वाले एंड को नीचे वाले एंड के साथ आपने मिलाना है, जैसे यहाँ पर हमारे पास मिला हुआ है। चौथा रूल है, अगर तो किसी भी एलिमेंट्स के ऊपर, अगर तो उनके ऊपर एक जैसा चार्ज है तो उन्हें लिखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे सोडियम क्लोराइड में इन दोनों का एक है तो हमने इसको नहीं लिखा हुआ है। अगर डिफरेंट है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, तो इसको लाजमी लिखना पड़ेगा जहां पर जैसे आपने लिखा हुआ है। पांचवा हमारे पास है कि अगर तो कोई रेडिकल्स है, आयन से मिलकर बना हुआ है, तो उसके ऊपर अगर उनका नेट चार्ज एक ही है, यानी दोनों पर जो टोटल चार्ज है वो एक है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे जैसे यहाँ पर सल्फेट के अंदर SO4-2 लिखा हुआ है, बिल्कुल ये यानी कि इनवर्स में आ रहा है, तो ये नेट चार्ज ऐसे लिखा हुआ है। और फास्फेट के अंदर भी सेम इसी तरीके से हमारे पास ये PS4, ये नेट चार्ज ऐसे लिखा हुआ है। अगर ये ऐसे हैं, यानी कि इनको हमेशा नेट चार्ज एक जैसा है, तो इनको ऐसे लिखना है। अगर एक जैसा नहीं है तो दूसरी तीसरी जो एग्जांपल है उसको फॉलो करेंगे। और एक और बात यहाँ पर है कि अगर तो इस रेडिकल्स के अंदर जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है अलग और पॉजिटिव अलग आ रहा है, नेट चार्ज एक जैसा नहीं है, तो आपने क्या करना है, जो नेगेटिव चार्ज वाला एलिमेंट है उसको आपने हमेशा ब्रैकेट में लिखना है। जैसे यहाँ पर हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट के अंदर ये जो सल्फेट है, हमने इसको नेगेटिव, हमें पहले भी पता है कि इसका नेगेटिव है, तो हमने इसको कहां पर लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। और बिल्कुल इसके अंदर हमारे पास जो कैल्शियम फास्फेट है, इसके अंदर फास्फेट के ऊपर नेट चार्ज नेगेटिव है, तो हमने उसको भी ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है। ये टॉपिक था। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी वजह से किसी दोस्त का फायदा हो जाए। थैंक यू वेरी मच।